ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। All right, yeah, welcome everyone. I think my presentation got unshared or something. Okay, let me share the screen again. Okay, I hope my screen is visible, right? Yes, Prabhuji, now it is visible. All right, okay. Um, okay, I don't see many people. I don't know what happened, but nonetheless, we wait. Or okay, let's get started. We'll get started and we'll see whatever happens. All right. So just a quick reminder is we are in the last section again, Sthit Pragya, or what we are going to talk today is the section where how does he sit, right? 58 to 63. In fact, उसके अंदर भी subsection है, but we'll talk about when we reach there. So uh, essentially, it's about कि how do we restrain our senses? अपने आप को हम कैसे restrain करते हैं sense objects से? So I know with last session by Kanai Tower Prabhu, I think I feel very small talking about this section. Anyways, it was I feel truly a wonderful session. Anyways, let it. So whatever I heard. So anyways, so even before, let's talk about a revision. Okay. So the question is, हमने लास्ट टाइम सुना था ऐसा कुर्मा अंगानी व सर्वश, राइट? कि मतलब अपने सारे सेंसेस को कंट्रोल करके रखो और फिर जब जरूरत है तभी यूज करो, राइट? एनी एग्जांपल ऑफ एनी डिवोटीज इन द स्क्रिप्चर्स दैट यू नो हु डिड दिस, डिड लाइक दिस, कि अपने सेंसेस को सिर्फ भगवान की सेवा के लिए, भगवान के प्लेजर के लिए ही यूज करते थे और बाकी कुछ और नहीं करते थे, बाकी जगहों पे सेंसेस को नहीं लगाते थे? एनी एग्जांपल एनीबॉडी नोस? हरे कृष्णा गुरु जी। यस गुरु जी, अमरीश महाराज जो कि राजा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सारे संचय मतलब भगवान के ही सेवा में किया। प्रहलाद महाराज हैं, उन्होंने भी, और
Right. सबरी का भी एग्जांपल ले सकते हैं प्रभु जी। एक्चुअली ऑलमोस्ट सारे डिवोटीज ही आपको इस कैटेगरी के मिलेंगे जो अपने सारे सेंसेस को सिर्फ भगवान के लिए ही लगाते हैं। डिवोटीज स्पेसिफिकली, दिस इज द पाथ ऑफ डिवोशन, राइट? लक्ष्मण, ओके, इवन लक्ष्मण इज लाइक दैट। इनफैक्ट अम्बरीश महाराज का तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है भागवतम में। मतलब दिस इज व्हाट आई वाज रीडिंग दिस वर्स एंड आई जस्ट कुड कॉपी ओनली द मीनिंग। अगर आप ये इसका ट्रांसलेशन देखेंगे ना 9th कैंटो में, so it says Maharaj Ambrish always engaged his senses, his mind in meditating upon the lotus feet of Krishna. So mind को भगवान के बारे में सोचने के लिए लगाते थे. His words in describing the glories of the Lord, right? Words को सिर्फ भगवान का glories describe करने के लिए लगाते थे. His hands in cleaning the Lord's temple and his ears in hearing the words spoken by Krishna or about Krishna. He engaged his eyes in seeing the deities of Krishna. Okay. He engaged his sense of touch in touching the bodies of the Lord's devotee. He engaged his sense of smell in smelling the fragrance of tulsi offered to the Lord. And he engaged his tongue in tasting the Lord's prasad. He engaged his legs in walking to the holy place and the temples of the Lord. His head is bowed down before the Lord. And all his desires in serving the Lord 24 hours a day. Right. So Maharaj Ambrish never desired anything for his own sense gratification. He engaged all his senses in devotional service in various engagement related to the Lord. So it beautifully describes कि सारे senses को किस तरह से वो भगवान के लिए लगाते थे. और this is the path of devotion, by the way. Like, you know, Krishna consciousness का path ही है कि instead of, in fact, अगले काफी सारे verses में, this entire section till 63rd verse is this is the main thing to understand. अगर ये बात समझ में आ गई तो I think 63 verses तक ठीक ठीक से roughly समझ में आ गया, high level. That's what we should understand. So yeah, any questions on anything in the previous session that we should talk about, or any other section? Anyway. Okay, so this is I think there was one Mataji who was asking about anger, right? Last time. Yeah, last time. Anyways, I think she's not here. So we could have talked about it. This is a perfect verse to talk about it. Anyways, yeah, Varun Prabhu, you had something? Okay. All right. Yeah. So we can go to the next verse. Okay, let me go to the next verse. So we'll talk about 2.59 today. So last time हम बात कर रहे थे जिस बारे में, मतलब कनाई प्रभु was talking about it कि कैसे अपने सेंसेस को कंट्रोल करके रखना है, राइट? अपने सेंसेस को जहां एंगेज करना है वहां करना है, अदरवाइज नहीं करना है. नाउ हाउ कैन यू डू दैट, राइट? बोलना बहुत आसान है पर करना इतना आसान है नहीं, राइट? आई मीन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. ट्राई डूइंग दैट वन टाइम, राइट? कि ठीक है आज सुबह नहीं खाएंगे या कुछ ऐसी कोई चीज, एंड यू विल सी कि योर सेंसेस, माइंड, सारे लोग रिवॉल्व कर देंगे आपके अगेंस्ट, राइट? सो व्हाट डू यू डू? आई मीन हाउ डू यू कंट्रोल इट? सो दिस वर्स हैज द आंसर टू ऑल ऑफ दिस. अभी तक हमने कई सारी बातें की हैं कि मतलब कंट्रोल करो सेंसेस को एंड थिंग्स लाइक दैट. दिस वर्स हैज दैट आंसर. Okay, so the verse goes like this. Vishaya vinivartante niraharasya dehina rasvarjam rasopyasya param drishtva nivartate. Anybody wants to recite? Prabhuji, can I? Yes. Vishya वर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निर्वर्तेते. Okay. Thank you. Anyone else wants to recite? Krishna Prabhuji, let me try to. Yes. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. So the meaning is like this. A translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense object remains. But ceasing such engagements, by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. Okay, so it's a very very clear answer कि path of योग और ज्ञान जो है ना
उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। ओके, जो पहले लाइन में जो बोलते हैं भगवान कि मतलब एम्बॉडीड सोल जो है ना, उसे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे सेंस इंजॉयमेंट से, तो भी टेस्ट ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट विल रिमेन, मतलब इट्स नॉट इजी टू टेक इट आउट, ठीक है ना, ऐसे नहीं जाने वाला। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द सेंसेस, राइट, कि मतलब एक लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे सेंसेस को ही निकाल फेंको, मतलब ना अगर ये सेंस ही नहीं होते तो प्रॉब्लम ही नहीं होता। ऐसे भी एक्सट्रीम योगी आपको मिल जाएंगे जो मतलब अपने इस तरह की चीजें करने लगते हैं। बट दिस इज लाइक कि अरे आपको कैटरेक्ट हो गया है तो आपकी आईज ही निकाल के फेंक दी, लाइक दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, राइट। तो आपको जो प्रॉब्लमेटिक चीज है उसे चेंज करना होगा, राइट। अगर आप उसका किसी आदमी का हाथ पैर बांध के भी रख दोगे ना, मतलब बच्चे का कि ठीक है तुझे क्रिकेट नहीं खेलना है तो चुपचाप बैठ जाओ, हाथ पैर बांध के बिठा दिया, तो भी क्या होगा कि वो खिड़की से बैठा बैठा क्रिकेट देखता रहेगा, हो सकता है, राइट। सो सेंसेस को स्टॉप भी कर दोगे तो भी वो टेस्ट नहीं जाएगा। मतलब आप किसी और सेंस के थ्रू, चलो कुछ नहीं है, अगर हाथ से नहीं खेल सकता हूं तो आंख से देखता हूं, बट और एल्स माइंड से आप कंटेम्पलेट करते रहोगे कि अरे क्या हुआ होगा, कौन जीता कौन हारा। सो दैट इज नॉट गोइंग अवे एनीवेयर, राइट। सो कृष्णा क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जब आपको हायर टेस्ट मिलेगा ना, तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाएगा। आई मीन अगर आप किसी भी इस्कॉन के मंदिर में जाओगे ना, तो वहां पर जो रेस्टोरेंट होता है उसका एक ही नाम होता है, गोविंदा द हायर टेस्ट। ओके, दिस इज द नेम। ओके, सो हियर इज दैट हायर टेस्ट कम्स फ्रॉम दिस वर्स, कि अगर आपको हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट से अपने आप ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से कि अगर किसी को हलवा खाने को दिया जाए, राइट, तो व्हाई वुड दैट पर्सन नॉट गिव अप स्टूल, राइट, मतलब वो क्यों स्टूल खाएगा अगर उसे हलवा मिल रहा है तो। इनफैक्ट आप एक बेगर, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, राइट, थिंक अबाउट अ बेगर। उसे अगर रोज उसे क्या मिलता है, एक लेफ्ट ओवर फूड खाने को मिलता है, थोड़ा बहुत छोड़ा हुआ। अब अगर एक दिन उसे एक टेस्टी फूड दे देंगे खाने को, तो उसके बाद वो क्यों लेफ्ट ओवर फूड खाएगा? कोई रीजन ही नहीं है उसके पास लेफ्ट ओवर फूड खाने का। सो दैट इज द थीम ऑफ द होल थिंग, राइट, कि अगर आपके पास जब तक अभी यहाँ पर क्या है ना, मटेरियल वर्ल्ड में हमें पुरानी घिसी पीटी और थकी हुई सी सेंस एंजॉयमेंट की आदत हो गई है, राइट। जस्ट दैट अगर हमें एक अच्छा सेंस एंजॉयमेंट मिलेगा, मतलब लाइक अगर एक अच्छा टेस्ट मिलेगा, हायर टेस्ट मिलेगा, तो फिर फटाफट से ये जो थका हुआ सेंस एंजॉयमेंट है ना, उसका इंटरेस्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। दैट इज व्हाट दिस वर्स टॉक्स अबाउट, राइट। सो इट इज जस्ट अबाउट कि मतलब द सॉल्यूशन इज नॉट कि सेंस को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, बट द सॉल्यूशन इज कि सेंसेस को प्यूरिफाई किया जाए, ठीक है। सो बिकॉज आप एक्ट करना स्टॉप नहीं कर सकते सेंसेस, राइट। आईज का काम ही देखना है, जो हम अभी अम्बरीश महाराज की जो वर्स है, राइट, व्हाट ही सेज इन दैट वर्स, मतलब व्हाट इज डिस्क्राइब्ड अबाउट हिम इन दैट वर्स, राइट, कि मतलब आप देखना बंद नहीं कर सकते, चलना बंद नहीं कर सकते, बाकी चीजें बंद नहीं कर सकते, तो व्हाट टू डू, engage them in a higher taste, and then things will brighten up, right. In fact अगर इसका परपोर्ट देखोगे ना, तो वहां पर शील प्रभुपाद बहुत ही कुछ अच्छे पॉइंट्स बोलते हैं। ओके, सो लेट मी रीड फ्रॉम द परपोर्ट, आई जस्ट मिस द बुक, मैं ऑनलाइन देख के बताता हूँ आपको। हाँ, सो इन दिस परपोर्ट he says something like sense restriction by some spiritual processes like ashtanga yoga in the matter of yam niyam asan pranayam pratyahar dharana dhyan etc is recommended for less intelligent person who have no better knowledge. So he is saying कि अरे ये सब जो है ना, ये अष्टांग योग वगैरह जो है ना, बहुत ही कम इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं, जिन्हें कोई अच्छा नॉलेज नहीं होता, उनके लिए होता है। So I don't know if you understand, yam and niyam is about how to restrict yourself, okay, and how to what to take and what not to take and things like that. और ये आर्टिफिशियल है, बिकॉज दिस इज लाइक कि जैसे होता है ना कि अगर आपने एक बर्तन है, आपको बोला जाए कि उसकी सारी हवा निकाल दो, तो आप उसकी हवा कैसे निकाल दोगे, राइट, एंड दैट इज आर्टिफिशियल कंडीशन फॉर दैट वेसल, कि आप उसकी हवा तो निकाल दोगे, बट जैसे ही मौका मिलेगा फिर से हवा घुस जाएगी, that's the situation, right. So artificially trying to restrain the senses, that is not going to work out, right. So ये सब उन लोगों के लिए है जो कि बॉडीली कंडीशनड है, बॉडी के लेवल पे ही सोच सकते हैं, they are not thinking beyond anything. The next Prabhupada says in the purport, but one who has tasted the beauty of Supreme Lord Krishna in the course of his advancement in Krishna consciousness
no longer has a taste for dead material things. So जो कि मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाता है, उसको ये सब मटेरियल चीजों का टेस्ट ही खत्म हो जाता है. ही इज नॉट बॉदर्ड एट ऑल, राइट. अगर आप मंदिर में, आई मीन एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, बट अगर एनीबडी गोज टू द टेम्पल एंड ईट खिचड़ी, राइट, अगर आप खिचड़ी वहां पे टेम्पल में खिचड़ी का जो प्रसाद मिलता है वो थोड़े दिन खाना शुरू कर दोगे ना, देन आपको जो बाकी लोअर टेस्ट है वो अपने आप ही छूट जाएंगे. ठीक है. इफ यू आर ईटिंग लॉर्ड्स प्रसाद, तो एनी काइंड ऑफ other food items that you wanted to eat, or you are habituated of eating non-veg, this that, all of that will go away on its own. आपको कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है. दिस इज साइंटिफिक थिंग, मतलब इट हैज बीन प्रूवन टाइम एंड अगेन फॉर years and years, right, for ages and ages. Okay. Next, he says, therefore restrictions are there for the less intelligent neophytes, right, in the spiritual advancement of life, but such restrictions are only good until one actually has the taste for Krishna consciousness. So he says कि मतलब ये सब जो होता है ना, restrictions वगैरह की, ये मत करो, वो मत करो, पैसों को हाथ नहीं लगाओ. लाइक ऐसे आपको योगी मिलेंगे, राइट, जो बोलेंगे कि नहीं नहीं, पैसों को हम हाथ नहीं लगाते, या फिर हम घर को छोड़ के जंगल में रहते हैं या पहाड़ में रहते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, थिंग्स लाइक दैट. व्हाट इट इज सेड हियर, एज कृष्णा क्लियरली सेज कि ये सारी चीजें काम नहीं करने वाली. ओके, दिस नॉट गोइंग टू मेक यू बेटर, बिकॉज कब तक आप रिस्ट्रिक्ट करोगे, एक पॉइंट पे जाके फंसने ही वाले हो आप. सो यू आर गोइंग टू गेट स्टक, राइट. सो यू हैव टू not restrict the senses, but rather purify them. Okay, that is the key. Any questions, any thoughts so far? For or against this thought? Okay. प्रभु जी, जैसे आपने एक बार बताया था कि प्रभुपाद को एक कोई तो डिवोटी थे जो दंडवत नहीं डालना चाहते थे, तो वो सेंसेस में आएगा क्या? नहीं माता जी, वो एक्चुअली ना, इट इज नॉट अबाउट सेंसेस, इट इज मोर अबाउट आपका ईगो और इस तरह की चीजें. ठीक है. सो या दैट इज स्लाइटली अ डिफरेंट थिंग, कि मतलब आपके अनर्थ जो है ना, ईगो और इस तरह की चीजें, वो सब प्यूरिफाई नहीं है. वो भी प्यूरिफाई हो जाएंगे ऑफ कोर्स. आई मीन एनीथिंग, एवरीथिंग गेट्स प्यूरिफाइड इज व्हाट आई एम सेइंग. लाइक कब कुछ भी, एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, you can imagine, everything gets purified by engaging it into the service of the Lord, right. We'll talk about multiple verses, multiple things, multiple examples now, but yeah, that is different than senses. Senses कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जो हम नॉर्मल आम भाषा में 5 इंद्रियां जानते हैं, बट बहुत है, उससे ज्यादा है. अगर आप एज पर भागवतम, दे आर लाइक कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया and things, but on a high level 5 different senses are there, right. Taste, touch, smell and things like that. So वो सारी चीजें प्यूरिफाई हो जाती हैं आपकी. ओके. और ये सेंसेस जो है ना, ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं, बिकॉज दे आर आवर गेट फॉर एंजॉयमेंट. उसके थ्रू ही हम एंजॉय करना चाहते हैं, इन सेंसेस के थ्रू. तो इनको कैसे प्यूरिफाई करें, इस बारे में ही भगवान बता रहे हैं इस वर्ष में. ओके. इनफैक्ट जैसे हम अपने आसपास भी देखते हैं, राइट, कभी अगर कोई बकवास कर रहा है, तो फर्स्ट रिएक्शन व्हाट वी डू इज कि अरे स्टॉप टॉकिंग, राइट, आप बकवास मत करो. और लेकिन कितनी देर चुप बैठेंगे. पॉइंट ये है कि मतलब ये जो सेटअप वाली चीज है ना, दिस नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर लॉन्ग. सो द आइडिया इज कि अरे आपको अगर बात ही करनी है, तो लेट्स टॉक अबाउट सम हायर थिंग्स rather than be keeping quiet. Let's talk about some higher purpose. Okay. अभी higher purpose क्या होता है, like now that lot of people, I mean all of us are practicing devotees, so what should be the higher purpose? Like पहले हम जब devotee नहीं थे, तो हम world politics के बारे में बात करते थे. Now what should we do? Should we talk about politics among devotees, or what should we do, right? I mean, so the higher purpose for everything, right, for the tongue, like जैसे अम्बरीश महाराज भागवतम में बताते हैं उनके बारे में कि higher purpose for tongue is that you glorify devotees, right. Higher purpose for eyes is that because eyes wants to see some form, right, so you take darshan of the Lord. The higher purpose for ear is कि मतलब you hear some kirtan, even if you have a urge कि मतलब नहीं मेरे ears को मेरी खुद की glory सुनने का शौक है, then what will we do? Okay, yeah, that's the question. What do you do if your ears want to hear glories of yourself? Yes, Mataji, Sunai Mataji says 24. Correct, Mataji. 24. Those are 24 elements, in fact. But there are but yeah, that's a different topic. But yes, you're right. So 24 includes the Karmendriya, Gyanendriya, sense objects,
and other things. So okay, yeah, अगर आपके ears को अपनी glory सुनने का शौक है, then what should you do? How do you put it in a higher purpose? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, ma'am. हम ऐसे सोच के कर सकते हैं कि हम भगवान के दास हैं और हम भक्ति मतलब इतनी अच्छी करेंगे सेवा, और भक्तों की भी भक्ति करेंगे तो फिर मतलब हो सकता है वैसे, शायद, पता नहीं प्रभु जी, गलत भी हाँ, हो मतलब सकता आप पास नहीं, आप पास में ही है, मतलब अगर हम अच्छे से सेवा करेंगे, अगर हमें अपनी ही तारीफ सुनने का शौक है ना, तो एटलीस्ट द इस एस्पिरेशन कुड बी कि ठीक है, माय सीनियर्स शुड बी एबल टू से समथिंग गुड अबाउट मी, राइट? दे शुड फील कि मेरी सर्विस थोड़ी अच्छी है, राइट? इवन दैट विल बी अ गुड इनफ मोटिवेशन, that could be a good enough motivation, right? That actually at least could enable us to serve more, मतलब हमें थोड़ा उससे encouragement मिल सकता है, right? But the point is कि think about the higher purpose always, right? अपने legs को, hands को, बाकी सारी चीजों को हम कैसे भगवान के लिए engage कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए. And as we engage them, everything gets purified, that is guaranteed. ठीक है, तो भक्ति में सेंसेस यूज करने पे बैन नहीं है. योगी जो है, दे इन द योग और ज्ञान मार्ग, दे ट्राई टू स्टॉप द सेंसेस. ओके, इन भक्ति वी डोंट से लाइक दैट. ठीक है, व्हाट वी डू इज सम बेसिक ऑस्टेरिटी, कि ठीक है, जो देयर इज सम बेसिक डूज एंड डोंट्स, फॉलो ऑल दैट, बट बियॉन्ड दैट व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट एंगेज इट इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, राइट? एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड टू गॉड, right? Eat nice prasad, hear nice music, dance, do whatever, right? But as long as you keep it connected to Krishna, everything else is fine, right? Okay, so in fact, yeah, so Padma Puran, uh, okay, even before we jump to this verse, let me ask a question. So any example you know from your life जहाँ पे आपके lower taste छूट गए, मतलब because of engagement in the higher taste? Anybody has any example? या प्रभु जी, जैसे Yes, पहले ऐसा होता था कि कभी भी आप फ्री हैं और आप घर पे जब कोई भी नहीं है तो आप टीवी चला के बैठ गए, फालतू के ऐसे ही सीरियल देख रहे हो, वो आप बिल्कुल भी मतलब आपको याद भी नहीं आता. इवन लॉकडाउन था, आप पूरी तरह से फ्री हो, लेकिन फिर भी कहीं भी नहीं, आपको जब भी फ्री होते हो आपको ऐसा लगता है कि या तो आप कृष्ण कथा कहीं सुने या फिर कुछ पढ़ें. तो yeah, मतलब मुझे पर्सनली लगा है. yes Mataji, perfect, yeah, that's true, exactly. एक टीवी वगैरह तो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है. Yeah, एक क्वेश्चन था, वो मेरा नहीं, पीहू ने कल मुझसे पूछा था कि जैसे ये चिप्स वगैरह खाते हैं बच्चे, क्योंकि वो भी उसने एक कैंप ज्वाइन किया हुआ है, तो उसमें था कि अपनी स्पाइसी फूड और ये जो है वो अपना मोड ऑफ पैशन के लिए होता है. तो शी वाज आस्किंग कि हमें क्या वो चिप्स नहीं खाना चाहिए. तो मैंने तो उसको ये आंसर दिया था कि आप यदि अपने मन को रोकोगे तो अभी आप छोटे हो सकता है कि थोड़े दिन बाद फिर आपको लगे कि नहीं यार, किसी ने आपको ऐसा थोड़ा सा लालच दिया और फिसल गए, तो वो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. तो बेटर है कि आप ये सोचो कि मुझे यदि ये खाना है तो क्या मैं ये भगवान को ऑफर करके खा सकता हूँ, तो वो आपको हेल्प करेगा. तो right, right. करेक्ट, और क्या मतलब और मैं उसको समझा सकती थी. नहीं, you're right माताजी, मतलब as long as हम अपने अच्छे से कुक करके भगवान को ऑफर कर सकते हैं, then nothing can be better than that. Anything is fine, मतलब it's okay. मतलब we are not at that level कि हम अभी मोड्स के बियॉन्ड तो है नहीं अपने, राइट? तो ये अगर हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, दिस वर्स सेज लाइक दैट, राइट? कि आपका दिस इज वर्स हैज दैट आंसर, मतलब यू नो, इफ यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, देन द डिजायर फॉर सेंस ऑब्जेक्ट रिमेन्स, राइट? आई मीन, तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन सेंस एंजॉयमेंट का सॉल्यूशन नहीं है. द सॉल्यूशन इज की एंगेजिंग इट टू अ हायर टेस्ट. अगर आप गोविंदास जाओगे, राइट, अभी अगर आप यहाँ पर तो इतना हैदराबाद में the Govindas don't have too much of variety, but अगर पुणे में आप जाके देखोगे, वहाँ पे whatever, or you go to Mumbai and other places, the Govindas has so much of variety, whatever you can think of, right? Anything like you name it, right? And the authentic Chinese, authentic Italian, so many other things you get, or yeah, and which is spicy and things like that. People, of course,
start going there. A lot of people जो devotees नहीं भी हैं वो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे प्रसाद खाने के लिए. And then I have seen devotees who beyond a point they stop going to Govindas, thinking कि नहीं Govindas is not the thing. हम जाके अगर मंदिर में महाप्रसाद मिल रहा है then we'll have it, but otherwise Govinda is not required, and they lose that taste also, and that happens. And it's just a matter of ठीक है elevation, but हमें unnecessary restrict करना is not the idea. उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला. In fact उससे गलत होने के chances ज्यादा हैं. Yeah, for kids definitely that, like we, rather than restricting we should teach them how to engage, but that should be the idea. Yeah, you're right. I mean, you did the right thing. Any other example where anybody got lost the taste of some lower stuff because of higher engagement? Because I know this works. This is definitely. Can I say something? Yes, Madhu. Yeah. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah, like previously, before coming into this practice, I used to enjoy gossiping for the people. We used to gossip, my friends and me. Now I don't have any interest. मुझे लगता है ये सब किसी और के बारे में क्या बातें करनी है. मतलब why to waste your time in gossiping people? Instead, if you have time, then you could talk about God or anything useful for you. Right. वो होता नहीं है. मतलब जैसे आप सोच रहे हो तो वो फ्रेंड्स भी वैसे नहीं सोचते, तो आपको sometimes you feel कि you are out of the crowd. ये भी होता है. But then it's okay. I feel okay with that. Yes, Madhu. I mean, in fact, right. It's a different बिल्कुल topic. इंटरेस्ट नहीं आता. हाँ, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता. पहले तो अच्छा लगता था. Used to enjoy it. Yeah. अभी इंटरेस्ट नहीं आता. No, that's a good progress. In fact, मतलब so it's called prajalpa. मतलब basically the technical term for gossip is prajalpa. और रूप गोस्वामी से अपने उपदेशामृत में कि अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यश्च क्षणभिर भक्तिर विनश्यति. I mean, it's a separate topic. Don't want to get too deep into that. But he says he gives 6 things which can destroy bhakti in a moment, and prajalpa is one of them. Okay, because it just takes you away from God. I mean, other words that are used in Chaitanya Charitamrita is called gramavarta. Okay, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु says कि ये सब gossip बैठ के gossip करना is not a very good idea. Just try to save your time, engage it in the right path, rather than engaging it in a so-called it's just a waste of time, right? I mean, I think the form of gossip has changed over time, right? Right now it is more about ki Facebook, WhatsApp, I don't know, so many, Twitter, whatever, right? And people spend hours and hours without realizing. So yeah, that also is the thing. But it's a good progress. Yeah. Thank you. प्रभु जी. Yes, Madhu. हाँ, जैसे मतलब हम सेंसेस को कंट्रोल करते इट विल एक्ट लाइक अ स्प्रिंग की जैसे मतलब सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं. किसी को डाइट बोला है करने के लिए तो फॉर सम डेज ओनली लाइक 2 किलो कम करना है, 2 किलो कम कर लेगा जबरदस्ती करके कंट्रोल करके. बट आफ्टर लूजिंग 2 kgs ही विल स्टार्ट ईटिंग डबल व्हाटएवर ही क्रेव्स फॉर. ऐसा होता है मतलब कि ये नेचर है ह्यूमन का. तो इंस्टेड ऑफ लाइक अपने जो कृष्णा कॉन्शियस में जब आते हैं तो फिर हम एवरी सब लाइक बैलेंस में खाते हैं, हर एक चीज ले सकते हैं, लेकिन वो मतलब कि पता रहता है कि हमको भक्ति करनी है. जितना हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं वैसे खाना खाएंगे तो हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं कि हमको डिसीज भी नहीं होना है. बीमार रहेंगे तो भी नहीं हो पाएगा. तो फिर ये चीज हम मतलब ध्यान रख सकते हैं. तो ये एक मतलब मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर नोटिस किया है. और दूसरी चीज की हम जैसे अभी ये तो हो गया फिजिकल लेवल पे. दूसरी चीज आती है कि स्पिरिचुअल लेवल पे. स्पिरिच मतलब कि अपना थिंकिंग पैटर्न पे. जैसे माता जी ने कहा ना अभी गॉसिपिंग का, जैसे ठीक है वो तो आगे की बात हो गई गॉसिपिंग, लेकिन कोई अभी कोई कुछ बोलता है हमको क्रिटिसाइज करके अच्छा या बुरा, तो वी कैन लाइक थिंक इट इज लाइक न्यूट्रल ले सकते हैं कि उसका इफेक्ट ना होने देना, कि एक्सेप्टेंस आ जाता है, टॉलरेंस आ जाता है अपने अंदर. ये चीज की हम उससे मतलब कि उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता, मतलब कम होता है. नॉट इन द सेंस कि
हम उसको रिएक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका एक्सेप्ट करके चलो ठीक है, दीज आर लाइक कि पास्ट कार्मिक अकाउंट है, चलो हो गया, जाने दो। उसमें अगर कुछ सीखने लायक है, कुछ अपने अंदर लाइक है क्या वैसा, तो ये चीज देख के हम उसको रेक्टिफाई करने का कोशिश करेंगे तो Right, right, Master. You're right. मतलब spiritual level, I mean, not spiritual, but subtle level पे definitely, I mean, there are lot of other things happen. Correct, you're right. मतलब, but one thing is for sure कि even materially, मतलब even in the gross level, बहुत सारे changes हो जाते हैं. As you're right, and like for example, tea, coffee, onion, garlic, ये सब तो अपने आप लोगों का छूट जाता है. नॉन वेज छूट जाता है लोगों का, liquor छूट जाता है, and things like that. And this is magic. मतलब nobody, and in fact without lot of effort I have seen people जिनका अपने आप ही इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. मतलब the time when, I mean, I remember um, when we used to attend classes with Kanaito for long time back, um, very early classes, we had one person with us, and now he's initiated living in US, by Bhakti Charu Maharaj. Years back he got initiated. So he was like I mean, of course he was a Bengali, और वो बंगाली थे, और उनको काफी उसका फिश का बड़ा शौक था. ऑफ कोर्स दैट इज नेचुरल फॉर, और नेचुरल और व्हाटएवर फॉर देम. सो वो लोग वो आते थे क्लास में, और ही यूज्ड टू मेंशन कि मतलब और एक बार ऐसा भी हुआ कि क्लास, उन्होंने बताया कि क्लास खत्म होने के बाद तुरंत वो भाग के गए. मतलब ही सेड कि मैं एक होटल में गया और जाके मैंने फिश खाई, बिकॉज मुझे इतना क्रेविंग हो रहा था. थिंग्स लाइक दैट. आफ्टर फ्यू वीक्स ऑन हिज ओन ही सेड कि अभी मुझे ना फिश खाना हमने छोड़ दिया है, एंड आई डिडंट फेल्ट लाइक ईटिंग, आई डोंट इवन हैव दैट क्रेविंग. ओके. And he just left it. I mean, a couple of devotees I can talk about, like I know so many who left like crazy. I mean, one person, won't name him because I think people might know, some people might know that name, at least in Pune. So basically he was like a big time smoker. और हम एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे. ही वाज वेरी अर्ली इन दिस थिंग, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एट दैट टाइम. एंड देन मैं अपनी कार में जा रहा था, एंड नहीं, उनकी कार थी. हाँ. एंड ही टोल्ड मी कि मतलब आई हैव नॉट स्मोक, आई डिडंट स्मोक फॉर लास्ट 2 वीक्स. मैंने 2 हफ्ते से स्मोक किया ही नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है अपने ऊपर कि मतलब मैं शायद कंटिन्यू कर पाऊंगा कि नहीं. इसलिए मैंने एक सिगरेट का पैकेट, देखो अभी उन्होंने दिखाया खोल के कि देखो मैंने एक डब्बा रखा हुआ है अपनी कार के अंदर, बट कभी कुछ गड़बड़ हो गई तो. बट आई डिडंट फेल लाइक स्मोकिंग फॉर लास्ट 2 वीक्स, एंड इवेंचुअली ही डिडंट स्मोक आफ्टर दैट. मतलब अपने आप ही उन्होंने छोड़ दिया. मतलब इतने सारे रियल एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं ना. मतलब वहां पे लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ता. Yeah, I can share about myself. Yes, yes, I please. don't feel shy sharing with all of you. Yeah. So before I came and joined before 2 years, I used to occasionally drink in office parties or with friends. We used to have a lot of house parties and all. So after coming in all these 2 years, this has all been, I mean, gone, and there is no, I mean, not even one single thought the moment I entered into this. And I used to now get surprised when I see, I used to have a lot of collection of like glasses of wine, champagne, and all those things, and now I see and I wonder what should I do. And I should gift it to my other friends who want, or this is one thing which and there was no effort. I mean, this is all Krishna's mercy. There was no effort made, it automatically got down. So now I am in a path where I'm about to like started not having onion garlic. So this, in these 2 3 years, I feel I mean surprised on myself. And including the I mean, one more attribute which I used to have lot of anger on small things. But now one thing I understood, whoever in front of me, if I'm getting angry, he's also I mean जीव जो हम बोलते हैं, जो Yeah. भगवान के बनाए हुए हैं. So why to hurt somebody on that? Yeah, wonderful, Mataji. मतलब thank you. Inspiring, really. Yeah, that is true. मतलब हम जब बोलते हैं ना कि Krishna is the supreme personality of Godhead, Prabhupada used to say, right? And we are part and parcel of the Lord. I mean, I always think कि that we is there, right? We are part and parcel. Like we means like हम सारे भगवान के बच्चे हैं, right? And if you are, all of us are like that, तो अरे हम किसको हर्ट कर रहे हैं, right? I mean, and we want to reach to please Krishna, और उसके अलावा हम उनके बच्चों को हर्ट कर रहे हैं. That thought itself is not very good. At least I don't find that
very motivating कि मैं ऐसा कुछ करूं. But amazing progress माता जी, मतलब like very very amazing, seriously. हरे Humble to कृष्ण hear. प्रभु जी. Yes माता जी. हम प्रभु जी, मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक रहा है उसमें अभी ऐसा हो गया है कि हम लोग का जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा हो गया है कि कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो हम लोग उसे है ना कृष्णा से कनेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये अगर अच्छा है तो भगवान की मर्जी है, और अगर बुरा है तो कुछ प्लानिंग है भगवान की कि शायद हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है आगे, इसीलिए ये चीज़ हमें बुरी दिख रही है अभी शायद. तो Right. इस तरीके से हम चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हर चीज़ को मतलब ऐसे नॉर्मल लेना, ना बहुत ज़्यादा खुश होना और ना ही ज़्यादा बहुत दुखी हो जाना, कि सब कुछ भगवान की मर्जी से है जो भी हो रहा है. वो बात तो है मतलब that is true. हमने हमने इनफैक्ट प्रीवियस कुछ वर्ष पहले इस बारे में डिस्कस किया था कि मतलब दिस इज हाउ द डिवोटीज बिहेव नेचुरली, कि मतलब अच्छा कुछ हो रहा है तो भगवान की मर्जी है, और अगर बुरा कुछ हो रहा है तो ठीक है, भगवान ने मुझे कम तकलीफ दी है, इससे ज्यादा देने वाले थे, बट उन्होंने मेरी तकलीफ कम कर दी. या अदिति माता जी, आपका हैंड रेस था आई थिंक. Yeah, I was supposed to tell the same thing what Suman Mataji just said. कि there's a stability in the behavior and अपना, क्योंकि किसी भी चीज़ में अब ऐसा हाइपर नहीं होते कि अरे if we have a problem so we take it easily कि हाँ that's okay, कि ये कुछ सोच के ही भगवान कर रहा है कि will be okay. और अगर अच्छा कुछ हुआ तो भी we don't get excited कि अरे इतना अच्छा हो गया. किसी भी चीज़ का अति नहीं है, ना दुख में प्रॉब्लम है ना सुख में प्रॉब्लम है, एक स्टेबिलिटी है और एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है कि गॉड इज़ विथ मी. तो अभी जैसे पेंडेमिक में इतने सब जगह इतना बैड न्यूज़ सुनने में आ रहा है, बट आई एम लाइक कूल कि हाँ ठीक है, भगवान है हमारे साथ में, वो कभी कुछ ऐसा नहीं होने देगा. अगर होगा भी तो ठीक है, उसके हाथ मतलब उनकी मर्सी है, जो भी हो रही है हमारे साथ में जो भी होगा वो उनकी मर्सी से ही होगा. एंड आई ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद इन अप्रैल विद माई किड्स, एंड दिल्ली में बहुत बुरा हाल हो गया था, बट टचवुड वी केम सेफली. और मतलब वही डेज थे बिल्कुल जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, बट टचवुड हम लोग आके हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, हम लोग सेफली वापस आ गए. तो एक वो और ज़्यादा फेट हो गया कि जहाँ लोग ट्रैवल करके गए और किसी को कुछ सुनने में आ रहा था और हम लोग सेफली आ गए. तो दिस इज़ मर्सी ऑफ गॉड कि उन्होंने इतना ध्यान रखा हमारा कि बच्चे मेरे और मैं हम लोग सेफली वापस पहुँच गए. तो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस उन्होंने डेवलप कराया है, जो मतलब फेथ और बढ़ा दिया है बहुत ज़्यादा. That is true, mother. Krishna takes care. That too, I am not doing chanting, like पूरे rounds नहीं कर रही हूँ मैं, अभी halfway ही हूँ. But then also I feel so much confidence and I have so much faith. तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है. Yeah, Krishna takes care, Mataji, but more than materially, he takes care of us spiritually, because he is bothered more of us as a spirit soul. Right? He wants us back. In fact, purify us and wants us back. ये सब, but that is true. I mean, I totally agree. मतलब so नहीं, but confidence जो अब दिया है ना भगवान ने, वो गजब का ही है. I cannot express that. I totally मतलब I'm not frightened of anything now. कुछ भी हो जाए ऐसा लगता है. I totally understand. माताजी, मतलब एक एथिस्ट, देखिए अभी इस पेंडेमिक के टाइम पे ना, मतलब वेदर यू आर अ एथिस्ट or you are a devotee, right? Everybody wants to pray. Like, when you are helpless, you want somebody to help, right? Abhi I wonder sometimes कि मतलब whom will the atheist pray for, right? Whom will because there's nobody to hold on to. आपका कोई भी higher connection है ही नहीं, तो आप किसे pray करोगे? It's very painful. I think it must be very very painful for them. We know that God is in control, and I'm sure कि nothing is happening by chance. यहाँ पर हम फर्स्ट सेशन ऑफ डिस्कवर योरसेल्फ पे जब बात होती है तो पहला यही बात समझते हैं कि गॉड इज इन कंट्रोल, राइट? यहाँ पे कुछ भी, इतने प्लैनेट्स, इतना सब कुछ अपने आप नहीं चल रहा है. इफ नथिंग इज हैपनिंग बाय चांस, तो ये सब जो भी हो रहा है ये बाय चांस नहीं हो रहा है. देयर इज अ पर्पस बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, राइट? एंड दैट गिव्स लॉट ऑफ faith and comfort, for sure. I agree. Yeah, thank you. Totally agree. Thank you, Prabhuji. Thank you so Thank you. much. Anyone else? Okay, I know. Just प्रभु जी, और एक बात yes. बोलना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ. जैसे Yes. अभी ये लॉकडाउन हो गया है, सब मतलब अपने घर के अंदर ही है,
मतलब अभी नियर अबाउट मोर देन 1 year लाइक ऑल एंटरटेनमेंट थिंग्स आर क्लोज, लाइक शट डाउन ही है। उससे पहले से भी हम मतलब कि मैं और मेरी बेटी को ऐसा उतना जाने का अच्छा लगता नहीं था क्राउड एरिया में, लेकिन हम मतलब कि जब कभी सेशन रहता है यहाँ पे रहता था तो फिर हम इगरली जाने का सोचते थे कि वहाँ पे प्लान करते थे जाने का। अभी जैसे कि अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं कि मतलब रिलेटिव्स में कि अरे मूवी मतलब थिएटर्स बंद है, ये मॉल्स बंद है, तो दे फील लाइक कि क्या बोलते हैं सफोकेशन टाइप ऑफ फीलिंग होता है कि एंजॉयमेंट जो है ना फन काइंड ऑफ एलिमेंट नहीं है, लाइक सोशल एंजॉयमेंट जो भी है वो नहीं है। तो ये बिल्कुल मिस नहीं मतलब करते हम। इनफैक्ट ये लॉकडाउन तो वी फील लाइक कि ये बहुत अच्छा मतलब मर्सी है कि हम उसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस काफी ज्यादा अटेंड करना शुरू हो गया है। आपका भी क्लास उसी मतलब लाइक इट्स ओनली ड्यू टू मर्सी ऑफ लॉर्ड कि हम कर पाते हैं। तो ये एक चीज बहुत बड़ी है कि जैसे मतलब कि एक चीज है लेकिन उसके बारे में हम अलग अलग एंगल से सोच सकते हैं। तो जो कृष्णा कॉन्शियस का जो एंगल है वो मतलब कि बहुत ही वास्ट है और बहुत ही पॉजिटिव एंड लाइक कि दैट इज द फैक्ट, ये सोच सकते हैं ऐसा। That's true, मतलब a devotee because आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब for a devotee there is no dearth of things to be done. Like if you are engaging yourself for Lord, so there is no dearth of engagement. मतलब Radheshyam Prabhu was once telling us in one of the classes, he was saying कि मतलब एक बार वो जा रहे थे प्लेन पे, and whenever he goes, I mean, in fact, all of us, whenever we go like that, it's recommended to have a nice book, I mean, Bhagavatam or something else, and just why waste time? I mean, so he was going to, I think, US maybe, और भागवतम बैठ के पढ़ रहे थे, और उनके बाजू में एक बच्चा बैठा हुआ था और वो कुछ तो खेल रहा था, पबजी या कुछ खेल रहा था, ऐसे कुछ तो था। ही was probably he mentioned a name, I forgot. So he said कि वो कुछ तो एक खेल रहा था, और राधेश्याम प्रभु got curious कि ये क्या हो रहा है, maybe not PUBG, some car racing game. तो उन्होंने देखा कि कुछ तो खेल रहा है, and he says I kept on watching for some time, कुछ तो कार रेस हो रही है, ये वो हो रहा है, बोलते हैं मैं देखता रहा, फिर सो गया मैं, फिर मैं उठा, फिर पढ़ने लगा, फिर मैंने देखा क्या कर रहा है बच्चा, देखा अभी तक वो वही गेम खेल रहा है। एंड ही सेज यार कितना वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब सो मच, आई रेड सो मेनी चैप्टर्स, और मैंने सो भी लिया और सब कुछ कर लिया उस बीच में, एंड दैट किड वाज जस्ट playing like that. I mean, in fact, if you in fact Rajesh Prabhu, he's like amazing in that way, the way he engages. I mean, if you ever see him now, if you take him to your car at least, wow, I mean, you'll be blown away. That person doesn't waste a single second, totally engaged, matlab completely engaged, matlab he'll continue to read, he'll not talk too much, he'll just continue to read, continue to type, create new PPTs and sleep. Okay. And then he'll wake up and then he'll do the same thing. So he's amazing, I mean, totally absorbed in serving Krishna. Yeah, that way, yes, correct. I mean, for a devotee there is no dearth of engagement, they are always peaceful, doesn't matter aap kahan par ho, pandemic or no pandemic, it doesn't matter, all of this just goes away. Yeah. Okay, thank you for sharing that. Okay, anything else or we move ahead? Yeah, onion garlic, so I think everybody leaves. I mean, that's amazing ki matlab how come people are able to leave it. When you start, it looks like कि onion garlic जैसी चीजें भी छोड़नी पड़ेंगी, इतना आसान नहीं है, वैसी चीजें भी छूट जाती हैं, and people are happy about it, they don't feel anything. In fact, yeah, so uh, with that, let's look at this verse. In fact, पद्म पुराण में एक वर्स आती है, it says अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद् ग्रह्यम् इंद्रिय सेवोन्मुखे हि जीवादौ स्वयं eva sphurte ada. So it says, no one can understand the transcendental nature of the name, form, quality and pastimes of Shri Krishna through his materially contaminated senses. तो बोलते हैं कि मतलब हमारी, क्योंकि अभी क्या है ना, हमारी सेंसेस सारी मैटर से बनी हुई है, और इसके थ्रू हम भगवान के बारे में, भगवान को समझ नहीं सकते। दैट इज द प्रॉब्लम। लोग बोलते हैं ना कि मुझे भगवान को दिखाओगे तो मानूंगा। अरे आपकी सेंसेस अभी ऐसी केपेबल नहीं है कि आप देख सको, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। आपकी सेंसेस जो है दे आर मटीरियली कॉन्टामिनेटेड एंड बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू परसीव द लॉर्ड। द फॉर्म, नेम, क्वालिटी कुछ भी नहीं समझ में आती। कान के अंदर भगवान के नाम उतने अच्छे से नहीं जाते हैं, राइट? वी आर नॉट एबल टू परसीव देम, राइट? ओनली वन बिकम्स spiritually saturated by transcendental service to the Lord, uh, are the transcendental name, form, quality and pastime of the Lord,
revealed to him. So हमारी जो senses है ना, they are all material, and because they are material, they don't understand कि ये भगवान क्या है, मतलब उसके थ्रू समझ में आना मुश्किल है. लेकिन ये जब प्यूरिफाई हो जाएंगी, उस समय हमें भगवान अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएंगे. So इनको रेगुलेट करके, इन सेंसेस को रेगुलेट करके कुछ होने नहीं वाला, राइट. आपके उससे उनमें प्यूरिफिकेशन नहीं आएगी. बट अगर हम इसे एंगेज करेंगे ना, तो द सेंसेस डेफिनेटली गेट प्यूरिफाइड इनफैक्ट. and this is, as I said, scientific, right? मतलब and then bliss comes on its own because of that. So and this miracle happens only through bhakti. In fact, gopis जो है ना, वो of course you might have heard, not heard, some of you, कि मतलब gopis are like the most exalted level of pure bhakti जो इस वर्ल्ड में पॉसिबल है ना, वो they exhibited. Okay, as per all the scriptures, as per all the acharyas, as per Krishna himself, right? Nothing better is possible than what the gopis, the level of bhakti that they exhibited, right? So एक बार they were talking to each other. Okay, Rupa Goswami having his divine vision writes a verse. Okay, and this is the verse. It comes in Bhakti Rasamrita Sindhu. It says, Smeram Bhangi Traya Parichitam Sachi Vistirna Drashtam Vamshi Nyastadhara Kishalayam Ujvalam Chandrakena Govindakhyam Haritanum Itakeshi Tirthopakandhe Ma Preshthas Tava Yadi Sakhe Bandhu Sange Stiranga. So दो गोपी बात कर रही हैं आपस में, and they say, my dear friend, there is one boy, his name is Govinda. He is standing on the bank of the Yamuna near the Keshi Ghat, and he is playing on his flute. He is so beautiful, especially during this full moon night. If you have any intention to enjoy in this material world with your children, husband, or other family members, then please do not go there. So गोपीज क्या बोल रही हैं आपस में, कह रहे हो जो गोविंद है ना, वो केशी घाट के पास खड़े रहते हैं अपना फ्लूट बजाते हुए, और वो इतने ब्यूटीफुल है ना, और फुल मून नाइट में तो बहुत ही अमेजिंगली ब्यूटीफुल लगते हैं. और अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना अपनी मटेरियल एंजॉयमेंट का, तो वहां पर मत जाना, ठीक है. एंड दिस वर्स होल्ड्स द की टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग, ठीक है. सो इनफैक्ट कृष्णा का मतलब होता है सर्वाकर्षक, राइट, जो कि किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो हमारा जो प्लेजर है ना, दैट्स व्हाट गोपीज आर डिस्कसिंग, कि आपको मटेरियल एंजॉयमेंट का अगर इंटरेस्ट है ना, तो ये कृष्णा के पास मत जाओ, ठीक है. बिकॉज इफ यू गो टू हिम, तो फिर आपका उनका अट्रैक्शन इतना पावरफुल है ना कि आप ये सारा मटेरियल अट्रैक्शन भूल जाओगे, ठीक है. दे आर गिविंग एग्जांपल ऑफ, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट कंटेक्स्ट, बट एसेंशियली हमारा जो ये मटेरियल एंजॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो भी वो सब कुछ खत्म हो जाता है if you go near Krishna, and that is what has happened, right, to anybody who just tries to approach Krishna, ठीक है. पहले तो आपका मटेरियल वो सब कुछ ऐसे ही साफ कर देते हैं भगवान, राइट. अगर आप नेक्स्ट वर्स देखोगे ना, नेक्स्ट वर्स में यमुनाचार्य की एक वर्स है, and we'll talk about it when we reach there, where यमुनाचार्य also says similar thing, कि अरे मुझे अब इतना कृष्ण की भक्ति में इतना आनंद आता है ना, कि अब मुझे किसी और चीज का इंटरेस्ट रहा ही नहीं. और अगर मुझे कोई एक सुंदर स्त्री दिख गई ना, तो मुझे मन करता है कि मैं थूक दूं, मतलब कहीं पर. आई जस्ट स्पिट एट द थॉट ऑफ दैट आल्सो, मतलब आई हैव नो अट्रैक्शन फॉर एनीथिंग. यमुनाचार्य is one of the guru of Ramanujacharya. Okay, amazing devotee. So that is what these gopis are discussing, right? कि मतलब भगवान के पास जाओगे तो डेफिनेटली आपकी मटेरियल कंटामिनेशन है ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे, मटेरियल अट्रैक्शन सारे खत्म हो जाएंगे. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस टू ऑल द डिवोटीज. ओके, इनफैक्ट मध्य लीला में, इनफैक्ट दिस कम्स इन हरि भक्ति सुधोदय, बट चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में ये एक वर्स आती है. ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं जब वो भगवान को देखते हैं ना, तो क्या प्रे करते हैं. सो दिस इज व्हाट ही प्रेज. स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वं प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वान अपि दिव्य रत्नम स्वामिन् कृतार्थोस्मि वरम न याचे. So he says, Swamin Kritartho
kritarthosmi varam nayache. So he says, oh my lord, because I was seeking an opulent material position, I was performing severe types of penance and austerity. Okay. Now I have gotten you, who are very difficult for the great demigods, saintly persons, and kings to attain. I was searching after a piece of glass, but instead I have found a most valuable jewel. Therefore, I am so satisfied that I do not wish to ask any benediction from you. So, ध्रुव महाराज जब गए थे जंगल में तपस्या करने के लिए, तो गए इसलिए थे कि मुझे ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए. That was his desire, right? And with that desire he went. But भगवान के just दर्शन से, उनके टच से, he got so purified कि this is the verse he says. He says कि अरे मुझे बस हो गया भगवान, मतलब मैं क्या, मतलब छोटी मोटी चीजें मांग रहा था, ग्लासेस, मतलब एक ज्वेल को छोड़ के मैं पीस ऑफ ग्लासेस मांग रहा था, राइट? और मैं इतना सेटिस्फाई हो गया हूँ सिर्फ आपके दर्शन से कि बस अब मुझे इसके आगे कुछ भी नहीं चाहिए, राइट? So that purifications happen when you approach Krishna, right? As you go near him, this is the purification which comes on its own, right? That people, material desires look like a very small thing to ask for, because we are all spirit soul, और हमारा जो bliss है ना वो spiritual bliss है. Okay, आपको ये material मजे अपने आप ही कम होने लगते हैं, and you feel like यार ये सब क्या है, मतलब क्या फालतू की बातें हो रही हैं. So that is what Dhruv Maharaj says. In fact, yeah, anybody knows this picture? Anybody knows what this picture, the story is? Varun Prabhu, you were listening to some lectures, right? Hare Krishna. Yeah, Prabhu. So Okay. there was a yatra of the deity, Lord of South में my temple है. I'm not able to recall the name. So वहाँ पे भगवान की यात्रा हो रही थी, और उस यात्रा में सब लोग जो है भगवान के रूप का, उनके गुणों का वो दर्शन कर रहे थे. वहाँ पे लोग जो हैं हरि हरि बोल रहे थे, और मतलब everybody was engaged in praising the Lord and doing some service to the Lord. और उसी में जब रामानुजाचार्य उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है वो एक स्त्री को छतरी जैसा यहाँ पे दिखाया हुआ है, छतरी लगाए हुए है, और वो कुछ नहीं देख रहा है, वो सिर्फ उसी स्त्री को देख रहा है. एंड देन ही वाज लाइक अमेज्ड के ऐसा भी कोई हो सकता है क्या, कि मतलब जो इतने भगवान जो कि इतने ऐश्वर्यवान हैं, उनको छोड़ के वो एक स्त्री के ऊपर इतना वो है, आकर्षित हुआ है. एंड देन ही कॉल्स, अपने भक्तों को बोलते हैं कि इसको बुला के ले जरा, आई वांट टू टॉक टू हिम. एंड देन उसको बुलाया जाता है, एंड ही टॉक्स, एंड देन पूछते हैं कि तुम्हें मतलब ऐसा क्या दिखा उसमें. तो जो I'm not able to recall the name of the person. तो बोलते हैं कि उसकी आंखें, जो स्त्री है उसकी आंखें बहुत ही सुंदर हैं, एंड आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल आईज जैसी उसके पास हैं. तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें इनसे सुंदर आंखें दिखाऊं तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू. तो कहते हैं कि इनसे सुंदर आंखें तो हो ही नहीं सकती. एंड देन ही सेज कि ठीक है, लेट मी गिव इट अ ट्राई. सो बुलाते हैं, और भगवान की जब आरती हो रही होती है तो उसको बोलते हैं कि स्टैंड हियर एंड ऑब्जर्व. और जब आरती होते समय जब भगवान की आंखों पे जब दिया जाता है और उनकी जब आंखें वो देखते हैं, रंगनाथ भगवान, तो he is simply spellbound and he could not believe के वाकई में भगवान की जो आंखें हैं वो इतनी सुंदर हैं. And then he says कि yes you are right, और इस भगवान की जितनी आंखें सुंदर है उतनी सुंदर आंखें नहीं हो सकती. तो short from Yeah, in fact he gets totally transformed, right? मतलब सिर्फ भगवान की उन आंखों का दर्शन करके then he forgets about this lady, and he gets transformed to an amazing devotee. In fact, that's a separate story about these couple. But yeah, that is right कि मतलब भगवान, and that the essence is the same thing कि मतलब भगवान के सामने जो मटेरियल प्लेजर है ना वो बड़ा ही छोटा लगना शुरू हो जाता है.
and this is the effect which happens with everyone. I mean, just that not I mean, people don't realize कि ये सच है because आप लोगों ने ऐसे अप्रोच ही नहीं किया, इस मूड में कभी अप्रोच ही नहीं किया है भगवान को. अगर कोई भी इस मूड में अप्रोच करेगा तो ही विल गेट प्यूरिफाइड. दिस इज व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल हियर, कि अगर हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट अपने आप खत्म हो जाता है. All that interest goes away. Thank you for sharing. I was listening to one, audio where I don't know whether it's true or not. where वृंदावन में जो बांके बिहारी का टेम्पल है, वहां पे हर 2 मिनट में कर्टन्स होते हैं, बिकॉज बोला जाता है कि आप नहीं, मतलब भगवान की आंखें बहुत आकर्षित हैं, जो इस वजह से आई थिंक बोला नहीं माता जी, the story, there is a story around it. The story says कि if you actually so what happened once, I mean, but that's a orthogonal to what we are discussing, but basically Krishna actually came out once, मतलब because one person was like looking at him, and he with a desire to play and things like that. Krishna himself came out and he started playing and things like that. Okay, and the deities, they had to then he went back for some, I mean, so since then they made sure ki, Arey, you should not be taking darshan of Lord for that long. Some such story is there. Okay, the eyes are attractive, no doubt about it. But not only because of that, but because of that incident which happened where Krishna actually came out of the altar. भगवान बड़े अमेजिंग है. मतलब भगवान जितना हमें लगता है ना कि हम भगवान का दर्शन ले लें, मतलब प्रभुपाद सेज कि अरे अपने काम ऐसे करो ना कि भगवान आपको देखे, ना कि आप भगवान को देख के कुछ खास नहीं कर पाओगे. मतलब भगवान, आई मीन व्हाट टू से, हाउ टू डिस्क्राइब इट, बट जो भक्त वत्सल वर्ड है ना, वो बड़ा ही अमेजिंग है. मतलब भगवान बिल्कुल भी अपने भक्तों के लिए ना कुछ ज्यादा नहीं सोचते. मतलब नॉट जस्ट इन दिस टेम्पल बट इवन जगन्नाथ टेम्पल, राइट? जगन्नाथ जी भी बाहर आ गए थे एक बार ऐसे ही. He went out behind a girl, and like that, a lot of stories like that. But how, that's a different topic. But ये पक्की बात है कि भगवान जो है ना, जितना भक्त ईगर होता है उससे ज्यादा भगवान ईगर होते हैं भक्तों का साथ लेने के लिए. बट भक्त बनना पड़ेगा उसके लिए पहले. Yeah, we are just practicing right now, but हाँ, once we achieve that someday, some life, God is very very loving. Basically जब लोग बोलते हैं ना कि भगवान they don't even know, the people don't have understanding कि भक्ति होती क्या है और भगवान का प्यार क्या होता है. He is more eager than us, but that is the reason. मतलब there's something else that is it. यहाँ पे जगह, अगर आप रंगनाथ टेम्पल जाओगे ना, तो रंगनाथ टेम्पल is maybe the one of the few temples जहाँ पे भगवान लेटे हुए हैं. ओके, और वो बहुत ही डार्क है. मतलब वो एरिया जैसे साउथ इंडियन टेम्पल्स में होता है टिपिकल, वहां पे लेटे हुई सी मूर्ति है और वहां पे पूरा अंधेरा है. और जो पुजारी होते हैं ना, वो एक लैंप लेके जाते हैं और वहां से आपको लैंप से दर्शन कराते हैं. पहले उनके लेग्स दिखाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके वो आपको दिखाते हैं. और इतना अमेजिंग दर्शन होता है. द फीलिंग ऑफ गेटिंग दैट दर्शन इज अमेजिंग. मतलब आप कुछ मांगने जाओगे ना, आई पर्सनली हैव सीन दैट, कि मतलब ना आप मांगना या सोचना सब भूल जाओगे. You will just be amazed looking at that form. Huge DT. Okay, huge DT just lying down. बहुत ही अमेजिंग है. मतलब कुछ और सोच नहीं सकते उस डीटी को देख के. इनफैक्ट in the past the deities had eyes of there's a diamonds in those eyes. At one point it is said कि somebody stole those diamonds, and those diamonds right now are in somewhere in Russia or some place. This is what is said. And no wonder रशिया में इतने सारे डिवोटीज हो गए हैं अभी, because if the eyes of the lords are watching those people, I mean the number of devotees in Russia is like huge, hard to imagine. So yeah, yes, that's, but it's a wonderful temple. That Rangnath is like wonderful. Hard to describe. Anyways, okay, yeah, going ahead. I don't know, anybody knows this picture? Anybody knows the story? What is this story? हरिदास ठाकुर. Yes, Latesh. But क्या है story, क्या है? माता जी बता रहे क्या? मतलब माता जी बता रहे तो उनको बताने दीजिए. आप शेयर करिए माता जी. ठीक है माता जी.
हरिदास ठाकुर जो मतलब है कि वो दिन में 194 या 196 माला जपते थे मतलब, और वो मतलब मुस्लिम थे। अगर गलत हो जाएगा प्रभु जी तो प्लीज बीच में रोक दीजिए। ठीक है। 192 राउंड्स। हाँ। तो फिर वो देख के मतलब उनके जो विलेज में जो हेड रहते हैं उनका जो मतलब जपा में वो मतलब प्रोग्रेस करते हैं, तो उसको ऑब्स्टेकल या रोकने के लिए बिकॉज ऑफ लाइक एनवी और जेलसी वो एक प्रोस्टिट्यूट को, वैश्या को भेजते हैं उनका मतलब जो ऑब्स्टेकल लाने के लिए, बीच में विघ्न लाने के लिए या तोड़ने के लिए। तो वो जाती है वैश्या वहाँ पे और वो बोलती है कि मुझे आपका संग करना है। तो हरिदास ठाकुर जी उतनी ही नम्रता से बोलते हैं कि मेरे ये उतने राउंड्स होने दीजिए, माला जपना होने दीजिए, तो मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। तो वो पहले दिन मतलब कि वो बैठ जाती है, वैश्या बैठ जाती है और पूरा टाइम मतलब कि वो हरिदास ठाकुर जी की जप माला चलती रहती है और सुनते रहते हैं वैश्या वहाँ पे बैठ के। तो ऐसी पूरी रात निकल जाती है, तो थक के वो वापस चली जाती है। फर्स्ट डे इट हैपेंड लाइक दिस, सेकंड डे आल्सो इट हैपेंड लाइक दिस, थर्ड डे कि वो मतलब कि उस वैश्या में ऐसा मतलब परिवर्तन हो जाता है कि वो तुलसी मतलब, और ये होता है कि वो जहाँ पे बैठती है इट इज लाइक तुलसी महारानी के नीचे बैठते हैं और वो सुनती रहती है वैश्या। तो on third day she like कि herself she says कि हरिदास ठाकुर जी की मैं मुझे आप यहाँ पे जो यहाँ पे जो है हेड, विलेज के जो हेड है उन्होंने भेजा है आपकी जो तपस्या है वो भंग करने के लिए, आपको आपको फॉल डाउन करने के लिए भेजा है। लेकिन आप इतने मतलब प्योर हो, आप इतने क्या बोलते प्योर ही हो, शुद्ध हो कि आपका जो आप जो महामंत्र चांट कर रहे हो, नाम ले रहे हो, तो मुझे अपने खुद के ऊपर ही घृणा आ रही है। तो मैं बहुत मतलब कि फॉलन हूँ, तुच्छ हूँ, तो मुझे प्लीज क्षमा कर दीजिए। तो ऐसे बोलती है। तो हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं कि नहीं मतलब वो नहीं कुछ नहीं बोलते हैं वो, शायद मुझे उतना याद नहीं आ रहा है आगे का। तो और वो दैट लेडी लाइक उनके उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है एंड शी बिकम्स डिवोटी, लाइक कि वो फिर वही तुलसी की जो तुलसी का जो पौधा है वहाँ पे शी स्टार्ट्स चांटिंग लाइक वैशा का कैसा हृदय परिवर्तन होके शी बिकम्स डिवोटी बिकॉज ऑफ लाइक वन मर्सी ऑफ डिवोटी। ये एक Right, Madhu. Thank you, Madhu. Yeah, amazing. Thank you for sharing. Yeah, so there's a person called Ramchandra Khan. I mean, who was the head of the village, or because he was envious and because he was a Muslim and he wanted कि ये भी हरिदास ठाकुर मुस्लिम है और ये सब क्या कर रहे हैं पता नहीं. So he sends the Vaishya, or yeah, and finally Vaishya को हरिदास ठाकुर in fact knew. I mean, he says कि मतलब मुझे पता था कि आप क्यों आए हुए हो, but I was compassionate. मतलब मुझे लगा कि why should I let you go? So इसलिए मैंने ये सब 3 दिन तक सहा, और now that आई वॉन्ट यू टू वर्शिप दिस तुलसी प्लांट, और इसे वाटर करो तुलसी पे और भगवान का नाम लो. एंड सेइंग दिस ही वेंट अवे फ्रॉम दैट विलेज. सो आई थिंक द लर्निंग आर टू फ्रॉम दिस. मतलब एक तो लर्निंग ये है जैसा आपने बोला कि मतलब अगर हम डिवोटीज के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा हार्ट ट्रांसफॉर्म ऐसे ही हो जाता है. पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. मतलब यू नो पतितों को पावन कर देते हैं डिवोटीज. दैट्स द अमेजिंग पार्ट ऑफ अबाउट देम. The second thing which is relevant for this verse is that ki, because Haridas Thakur, who was fixed in devotion, right, he was in complete control of his senses. And the third thing is, in fact, the third thing to learn is कि the वैश्य, क्योंकि उसने भगवान के नाम सुने, राइट, भगवान से एसोसिएट किया, तो बाकी सारा लोअर चीजें अपने आप ही छूट गई. एंड शी वाज नॉट इंटरेस्टेड अबाउट एनीथिंग एल्स देयर, राइट. सो amazing story of transformation for that lady. मतलब of course हम लोगों के लिए try it with care, हम लोगों के बस की नहीं है, because we cannot think about doing that because we are not at that level, right, Haridas Thakur ke level. So in fact the word of caution for us is that ki never ever try it at home, like in the sense ki don't try to engage your senses unnecessary, ये सोच के कि चलो आज टेस्ट करके देखते हैं, right.
ऐसे last time भी I think Kanai Prabhu was saying the same thing, right? People go try to test it and can fall down. Haridas Thakur was like, a different league altogether. मतलब Namacharya, this is the name given to him by Chaitanya Mahaprabhu, right? Amazing devotee. अगर आप जाओगे ना उनकी समाधि पे अभी जगन्नाथपुरी में 24 hours that kirtan happens there throughout day and night. I mean, a different place altogether. So हम लोगों के समझ से परे है वो सब. So anyway, Chaitanya Charitamrita glorifies him like anything. The point is कि a person who's so fixed, for them this lower taste don't matter, and they can and anybody who comes in contact with a higher taste, the lower taste will go away. That these two things hold true always, no matter what. But we are not that fixed, for sure. You have to understand, and we should don't try it at home types. Yeah. Okay. Anyways, in fact, the next example I was thinking about, of course, our own Srila Prabhupada, right? So much, I mean, so much is talked about. This is like a miracle on its own. I don't know, अगर आप कोई Prabhupada book पढ़ोगे या Prabhupada Leelamrit, in fact, everybody should read Prabhupada Leelamrit. I mean, if given an opportunity, or at least Prabhupada book. Such amazing miracle, hard to believe, right? जो लोग बचपन से ही काऊ और इस तरह की चीजें खाने के आदी हैं, जो लोग इनफैक्ट अगर आप तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, I don't know if you have heard this name. He's like a very very dear disciple of Prabhupada. He was a hippie, और वो भी ऐसे वैसे हिप्पी नहीं, मतलब he used to live in a building जहां पर they were all naked, मतलब कपड़े कोई नहीं पहनता था, ठीक है. Drugs, this, that, whatever, sex. I mean, all those things are like common. I mean, like, nothing strange about it, right? उनका लाइफ ही ऐसा था, और उस तरह की लाइफ में इनफैक्ट he be either तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और so many others, right? I mean, अगर आप Taming the Rhino with Swami पढ़ोगे या कुछ ऐसी बुक्स पढ़ोगे जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने लिखी हैं, those people, all of them were like this, मतलब different level of hippies, ठीक है. And अगर आप बाद में तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के राइटिंग्स देखोगे, उनके लेक्चर्स देखोगे, you will be shocked and blown away. मतलब that person, amazing devotees, मतलब very very amazing devotees, ठीक है. Yeah, hard to understand कि ऐसा कैसे हो गया, how come this transformation. हम तो छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, ऑनियन गार्लिक छोड़ दिया या कुछ कर दिया, राइट, नॉन वेज छोड़ दिया, but for those people they've left like almost totally 180-degree transformation for them, right? How was that possible? It happened that's all Prabhupada did, nothing else, right? Just engage them in Krishna service, that's all. I mean, hear the holy names, Bhagwan ka prasad khao and things like that, right? Just do some service, that's all they did, and with so much only they got transformed. Prabhupada had no black magic, right, or something, but this is definitely a magic, like so this is exactly what Krishna says. Anybody can be transformed. In fact, किसी को अगर डाउट होता है ना कि अरे मेरे घर में सो एंड सो डिवोटीज नहीं है, कभी नहीं बन सकते या वट एवर, राइट, दिस इज डेफिनेटली यू कैन try it at home. I mean, it always works. Anybody who's engaged in Krishna's, somehow engaged, any senses engaged in Krishna, they get purified. For sure it gets purified. No doubt about it. There are so many examples. Anyways, any thoughts, questions? Okay. Yes, Aditya. Prabhuji, so can you help me, like how can I insist my family to come into this, like what can I do so that they also? No, you don't need to insist, as I said, right? Ki, matlab, the logic is simple. I can tell you couple of examples I know, like, one of my very good friend, he lives in Pune, in near the Radha Vrindavan temple. His mother is a very senior devotee, matlab, she's a counselor in fact. So and this person is also initiated, मतलब जो मेरे friend है, और actually उनका कैसे था ना, उनकी मदर एक समय पे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गई, उनके फादर और उनके बच्चे नहीं थे, मतलब and his son, like, that friend of mine, he was a dancer, मतलब big time dancer, big time meaning at that one point he was boogie में भी उन्होंने डांस परफॉर्मेंस किया था और things like that, और काफी आर्टिस्ट टाइप के इंसान थे, बट उनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, कॉलेज में पढ़ रहे थे वो उस समय,
अब उनकी मदर जाती थी टेम्पल पे, पर कोई और जाता नहीं था, तो व्हाट टू डू। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है, उनके हस्बैंड उनको टेम्पल में ड्रॉप करते थे, तो डिवोटीज यहाँ से थोड़ा वो प्रसाद लेके जाती थी अपना साथ में, और वो अपने हस्बैंड को भी खिला देती थी कि लो प्रसाद है भगवान का, ठीक है चलो खा लो। उनके हस्बैंड कभी अंदर भी नहीं आते थे। लड़के को क्योंकि इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत म्यूजिक में और इन चीजों में, तो उन्होंने बोला कि अरे यहाँ पे क्लासेस हो रही है मृदंगा वगैरह की, व्हाई डोंट यू कम एंड लर्न, ठीक है। एंड द बॉय केम, ओके, टू लर्न इट, and this is all story told to me by that friend of mine. Or while learning, of course, he made friends with some of the devotees boys. I mean, he was in college, and they got transformed like anything. The entire family were transformed with just engaging a bit small things in Krishna's thing. Koi philosophy, koi transformation magic was not required. As I am saying ki matlab uh, and they are like very highly elevated people. And I can tell you, when I say this, I'm not like, if you see them now, you'll be surprised. And this is not this happens with everyone. So that's what I'm saying ki matlab, if I mean, if you ever want ki somebody should be engaged, that the only thing that, I mean, that's why I keep on insisting here, discover yourself online is not fun. Okay, unless whatever I can say, what I can say, बट उससे ज्यादा जो होती है ना, अगर आप बैठ के प्रसाद खाते हो, आप डिवोटीज के साथ एसोसिएट करते हो, यू हियर सम कीर्तन, दे रियली ट्रांसफॉर्म। ओके, बीइंग अ वुमेन ऑफ द हाउस, you have lot of power, right? Because you have the power to cook whatever you want, you have the power to offer it to Krishna, and then let everybody eat prasad. Okay, uh, that helps, that definitely helps, I can tell you. I mean, these things are transforming. People don't realize that. And it happens. I mean, like, the hearing some good things happening. I mean, like, हम अपने घर पे वो जो भगवान का वो है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का बॉक्स, वो 24 घंटे चालू रखते हैं. No matter what, you never know what happens, right? Why not? Let's hear some transcendental thing, and you will be surprised कि ना transformations happen. I can tell you for sure with my experience. Like हमारे मतलब बहुत वो है, अजीब सी बात है, हमारे घर में एक मेड आती है पिछले 1-1.5 साल से, right? And of course she was not interested in any of this spirituality. हमें क्या, हम कोई उससे वो तो नहीं कर सकते कि मतलब आप कोई spirituality में interest होना चाहिए. Then one day she said to my wife कि मतलब जो मंगल आरती होती है आपकी ना, बड़ी अच्छी लगती है सुन के, और मुझे ना थोड़ी थोड़ी याद हो गई है सुन के, क्योंकि रोज जब वो सुबह आती थी तो कुछ कुछ हो रहा होता था, तो शी सेज कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है सुन के. देन वन डे ड्रेसिंग के बाद उन्होंने जगन्नाथ जी को हमारे घर में देख के बोला कि अरे आपने ड्रेस थोड़ा चेंज किया है, कुछ कलर थोड़ा ऐसा लग रहा है. शी स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन डीटीज ऑन हर ओन, ठीक है. एंड देन वन डे शी सेड कि टू माय वाइफ की माला है क्या आपके पास, मुझे भी माला करनी है. एंड राइट नाउ शी इज चैंटिंग 2 राउंड्स. ओके, surprising. I mean, like, we didn't do anything, we didn't told anything to her, no philosophy told, nothing of that sort. ठीक है, ऑफ कोर्स हमारे घर पे आती है तो कुछ प्रसाद वगैरह होता है, कभी कभी दे देते हैं, और बाकी वट एवर वी जस्ट कीप ऑन डूइंग अवर वर्क, राइट? सो द पॉइंट इज कि मतलब इसमें ना, दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग है कि ना, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड. इट इज जस्ट अबाउट हाउ कैन द सेंसेस बी एंगेज्ड फॉर हायर पर्पस, and they will start getting purified. And as the senses get purified na, the mind also get purified. Next verse जो है ना, उसमें exactly इसी के बारे में बात हो रही है वैसे, कि बिना otherwise this senses जो है ना, वो mind को भी लेके अपने साथ चले जाती है. Senses are very very powerful. So we should think कि how to engage senses in the right thing. Can we play some nice kirtan? Can we play? Can we eat some prasadam? Can we hear some good things? Whatever way, whatever amount is possible, whatever little things are possible. It may take time, but it works. It has always worked. Personally, from my experience, I cannot name people, as I was saying, right? मेरे पुणे में एक और भी बहुत ही dear friend है, whatever I call it. In fact, he is very senior. So a very well known face in Pune area. A very great devotee. So basically, when he was not in Krishna consciousness, those people had a bar in their hall. ठीक है, अपने हॉल में बड़ा, he's a Punjabi, things like that. हॉल में बार था और उसमें बहुत ही मस्त सजा के वो रखते थे वहां पे अपनी सब चीजें. तो now when he
and he got so transformed right now कि मतलब if you go to that place, his home, the same place where there was a bar, वहां पर ही जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा सा altar है. Okay, and so many classes happen at his home and variety of things. I mean, he's an amazing devotee. I can tell you this much. So the transformation does happen. It is for sure there. It's just about as I said, right? कि मतलब you have that power to make sure what your family eats, right? What kind of consciousness? Because see, one thing as Shastra say is कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, यानी कि अगर आहार शुद्ध होगा ना तो अंदर से मन जो है वो भी शुद्ध हो जाएगा, और जब मन शुद्ध होगा तो ध्रुवा स्मृति, तब आप एक्चुअल जो पर्पस है देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट इट, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. इनफैक्ट दैट इज द रीजन, वन ऑफ द, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कि हम क्या खाते हैं, आई मीन किसके हाथ का खाते हैं, बिकॉज उनकी कॉन्शियसनेस भी हमारे अंदर जाती है. सो इफ वी आर कुकिंग विद द राइट कॉन्शियसनेस और हम उसको भोग लगाते हैं भगवान को और उस प्रसाद को खाते हैं, it will definitely transform, no doubt about it. This is the magic of this whole process. Prabhupada didn't do anything extraordinary, I can tell you, right? I mean, he was an extraordinary person for sure, but the things that he laid out, we all can follow that. Okay, does it make sense, or does it still looks like a mumbo jumbo? Thank you so much. Yeah, just like, yeah, go ahead. हाँ, माता जी ने अभी पूछा ना, उसमें और एक मतलब की चीज होती है जो मतलब मैंने पर्सनल थोड़ा इस पे एक्सपीरियंस किया है कि आप जब खुद भक्ति में आते हैं कि लाइक तो घर वाले थोड़ा रिबेल कर सकते हैं या उसके अगेंस्ट भी रह सकते हैं, तो वो और एक जगह से मतलब अपना पेशेंस भी चेक होता है कि अरे तुम भक्ति कर रहे हो तो तुमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, तुमको ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो यू लाइक कि जस्ट माता जी की कीप सम पेशेंस, और वो आपको देख के ही अपने आप धीरे धीरे वो मतलब कि आ जाएंगे कृष्णा कॉन्शियस में. आप प्रसाद खिलाते रहिए और मतलब खुद के ऊपर ही वर्क ऑन कीजिए, इतना ही माता जी. Yeah, actually I can see the changes, little bit changes I can see. Like my eldest son is 15 years old, so whatever happens he says Hare Krishna, whatever happens if he gets bad marks or whatever, so he looks at me and says Hare Krishna mommy. Yeah. So and he started chanting, like only not exactly chanting, he's like he takes name of Krishna, matlab 2-3 times he takes when he does prayers. So and my husband, he listen whatever I learn from the classes, I always share with him every time. So at least he's listening, so might be there be changes gradually. So Mataji, philosophy, philosophy works, but now philosophy otherwise, as I said, right, कि मतलब मैं, you have to have lot of pious credit to be able to get something out of the philosophy, right? मतलब but जो चीज काम करती है ना, for sure, like so वो है ये प्रसाद, एसोसिएशन, द होली नेम्स, दे वर्क लाइक एनीथिंग. और ये बड़े ही सटल चीजें हैं जो समझ में नहीं आती है, लगता है कि पता नहीं क्या इससे क्या फायदा होगा, बट दीज थिंग्स आर अमेजिंग. आई कैन फॉर श्योर टेल यू कि प्रसाद डज वंडर्स, मतलब to everyone it does. मतलब there are so many, you go to any ISKCON temple and randomly pick up a person और उससे पूछो आप कि how did you came to Krishna consciousness, and you will be surprised कि majority, अगर आप ये सर्वे करोगे ना, तो majority of people will say कि अरे प्रसाद कहीं पर खाया था और हम वो प्रसाद के लिए चले जाते थे बार बार. Okay, so many people will tell you the similar story कि प्रसाद के नाम से चले जाते थे. ऐसे बड़े सारे केसेस हैं, I can tell you, मतलब जो ना सिर्फ प्रसाद, अभी जैसे ISKCON में there is youth preaching happens, which जहाँ पर काफी लड़के आते हैं और वो लड़के जो है ना सिर्फ प्रसाद के नाम से आ जाते हैं और कुछ नहीं करते, एंड बाकी टाइम पे सो जाएंगे, नहीं सुनेंगे, प्रसाद खाएंगे, चले जाएंगे. आई हैव सीन पर्सनली preached also in those places. I can tell you कि मतलब ना, but those people get transformed after some time on its own. Okay, this whole thing is very attractive. Krishna is very very attractive. Anything connected to Krishna just transforms us. Okay, so I think prasad is a very powerful thing for sure. और आज जैसे माता जी ने कहा, मतलब हमें देख के, मतलब दैट इज द बेस्ट प्रीचिंग दैट वी कैन डू. हाउ डू वी कंडक्ट अवरसेल्फ, राइट? हमें देख के वो लोगों को काफी कुछ समझ में आता है कि इनके साथ क्या हो रहा है.
but of course I know matlab this transformation may not happen immediately, but at least those things can be done कि मतलब आप भगवान का नाम अगर हम कहीं लगा सकते हैं, कुछ कीर्तन सुन सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, those things will work. Philosophy definitely works, no doubt that philosophy doesn't work, but just to keep in mind कि philosophy जैसे आप सुन के आप बता रहे हो उनको, फिर वो उनके मन में कुछ डाउट आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, आधा आधा हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, might work might not work, but prasad will 100% work. Nothing has to be said about it. It's a philosophy of its own. Yes. Yeah. Please try to do that for some time. You will see that change. Yeah, sure. Yes, Richa Mataji. भैया one question, मतलब we are understanding these examples जहाँ पे there is a transformation which has happened, but there will be so many cases where it didn't happen. So do we think that हमारी भक्ति में कुछ कमी है, और या फिर I mean the way we are doing, और plus जो हमारा होना चाहिए भक्ति में उतना नहीं है अभी तक, इसलिए नहीं हो पा रहा है. ओके आप ऐसे बोल रहे हो कि चेंजेस नहीं भी होते होंगे. I would not deny, although the one thing is for sure, मतलब आपको पता है कि मतलब लोग हमारे ना पुराने पास्ट अनर्थास और पास्ट कर्मास कभी कभी बहुत हैवी होते हैं, ठीक है, वो चीजें हमें कभी कभी आगे नहीं बढ़ने देती हैं. दैट इज द प्रॉब्लम कि हमें अभी और कुछ और प्यूरिफिकेशन की जरूरत है. द थिंग ऑफ द पास्ट आर सो हैवी दैट इट्स गोइंग टू टेक मोर टाइम फॉर अस. The only reason why people don't get attracted to this is because there is some qualification requires to get attracted also. मतलब आप ऐसे ही अट्रैक्ट नहीं होते हो इस चीज से, मतलब इस पूरी प्रोसेस से. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ गुड क्रेडिट्स फॉर डूइंग दैट, ठीक है. सो एंड दिस इज ऑल्सो अ रियलिटी, एंड दिस इज व्हाई दीज थिंग्स वर्क. जब आप भगवान का प्रसाद खाते हो, भगवान का नाम सुनते हो, तो देन यू गेट सम पास्ट सम पायस थिंग्स, कुछ सुकृतिस, और उसके कारण आप आगे बढ़ पाते हो. बट हाँ, तो दिस इज हाउ इट शुड बी अंडरस्टूड कि मतलब अभी द कर्मास आर वेरी वेरी हैवी फॉर देम. इट्स गोइंग टू टेक टाइम. वी हैव टू लाइटन दैट होल थिंग. मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ हेल्प कर सकते हैं, एंड देन इट माइट वर्क आउट. बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि मतलब anybody who gets attracted to this will get purified further, and even who's not attracted will also get purified. मतलब as per scriptures, हम लोगों को भी अगर हम लोग कहीं पे आ पा रहे हैं ना, मे बी इन पास्ट लाइफ कभी गलती से हमें भी किसी ने प्रसाद खिला दिया होगा, किसी डिवोटीज की हमने हेल्प कर दी होगी, कुछ ऐसे छोटे काम कर दिए होंगे, या मे बी कुछ पायस डीड्स किए होंगे. वी माइट हैव अप्रोच समबडी एल्स, मतलब सम अदर किसी और देवता को अप्रोच किया होगा, कुछ किया होगा, but because of our maybe some pure intentions, we got elevated. That's how it works. This is how the scriptures say. I can clearly tell you. So my second question in line with this is कि okay, we are doing, and I mean we are प्रसाद हम कर रहे हैं, ऑफर भगवान को वो खिला रहे हैं, प्लस वी आर doing our basic chanting, reading and all. सो ऑफ कोर्स अगर एक कोई इंसान करेगा उसकी प्रोग्रेस होगी धीरे धीरे, अगर पूरी फैमिली होगी साथ में तो ऑफ कोर्स वो प्रोग्रेस फास्टर होती है. सो हमें फिर क्या वेट करते रहना चाहिए कि हमारी प्रोग्रेस फास्टर जब भी होगी जब हमारी साथ में फैमिली होगी, और या फिर हम धीरे धीरे स्पेस से चलते रहें? मतलब हमें तो अपने स्पेस पे चलते ही रहना चाहिए. बिकॉज देखिए दो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके. मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वी आर ऑल इंडिविजुअल सोल्स, राइट. द सेकेंड, एंड सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन डेस्टिनी, राइट. हम जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम द if there are more people around us, right, Krishna consciousness definitely becomes very very sweet, beautiful, and we are able to all progress like anything. मतलब it gets compounded, मतलब for sure. मतलब अगर एक थोड़ा ढीला पड़ा, then other person can support and things like that. मतलब हम एक दूसरे के सपोर्ट से बहुत फास्ट आगे बढ़ते हैं. तो कोशिश तो यही करना चाहिए कि एटलीस्ट पीपल अराउंड अस, एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सी एज कृष्णा विल से इन द फर्दर चैप्टर्स, कि जब आपके डेथ के टाइम पर आपको भगवान का नाम आप सुन लोगे तो आप मुक्त हो जाओगे ना. वो कौन सुनाएगा हमें? मतलब क्या हम उस हालत में होंगे कि हमें कोई हम सुना पाएंगे अपने आप को? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट, टू डू दैट. आई नो सम डिवोटीज हु आर एबल टू डू इट. बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, राइट. अगर हमारे आसपास एक ऐसा सर्कल होगा, हमारे जो लोग होंगे जो हमारे लिए इतना कर सकें,
we need to cultivate those people. We need those people जो कि हमारे लिए हमारे लिए खड़े हो सके, right? I mean, that's what it is. मतलब जो हमारे लिए कर सके कुछ. Otherwise, I don't know what will happen. I mean, like for example, I can tell you a real thing which happened 10 days back in Pune. Not in Pune, actually. Like, so I mean, just deviating because just remembered that incident. So there is I mean, I would say close friend could say that Rasik Kumar Prabhu करके एक थे वहाँ पे, और he's from our counselor group, like very close group of devotees, very close to us, and he got COVID and he was in hospital. Okay, and this person was not at all bothered. Matlab, he was coming for all the sessions, everything, 2 days till 2 days back, and he was then in COVID. एक दिन पहले तक he was chanting. Last day he couldn't chant, and all of us, all the devotees were chanting for him, right? And that day, before leaving his body, his wife was disturbed and he was telling him the verses of Bhagavad Gita. And this person is 35 years old, by the way. Like, just think about it. Like, and not too much, not like 50 years of practice. Okay. Practicing since few years. And he was telling her the verses of Bhagavad Gita. Ki, matlab, this is, you have to tolerate heat and cold. Don't worry. Okay. And at the time of the death, he was chanting Krishna's name. Okay. Krishna Govinda. That was the last word which came out of his mouth before he passed away. But those people are rare. I mean, amazing people. But for us, it's difficult. So we have to create that circle around us that we are able to achieve that perfection. But so yeah, so I definitely, but we cannot wait, right? We don't need to wait. In fact, if we wait, then हमारा तो कुछ होगा नहीं, उनका भी कुछ नहीं होगा. इसलिए हमें तो आगे बढ़ना होगा. And as I said, it's not very complicated. We have to, if we are able to, I mean, if you increase your intensity of service of devotion ना, तो आसपास की चीजें अपने आप ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएंगी. I mean, you'll be surprised. ये सब अपने आप हो जाएगा. मतलब Krishna will create that cushion around you, that all of the things around you. मतलब he'll arrange. It's just about कि we have to have that intensity. We have to increase our intensity. Everything will follow for sure. Yeah, does it make sense? हाँ भैया. Okay. Yeah, any other questions? I don't think we'll be able to go to next verse. But okay, we are going a bit slow. In fact, what I will do is I will share the verses for memorization. I think because अभी 10-12 verses ही बची हैं test के पहले, so I think I will share that anyways. So that yeah, we'll have the test for the second chapter. So उसके लिए. In fact, one more thing I was thinking, and I don't know because हम पहले presentations कर रहे थे अपने यहाँ पे कुछ तरह के, right? Now for some of the acharyas and in parampara, abhi now we are not doing anything of that sort. We are done with one pass. So I was thinking what makes sense. I mean, one thought I have for iski last 10-15 minutes, should we discuss something like Vaishnava Sadachar or similar topic? Does it make sense? Some very small discussion we can do, because I feel that is like very, very important part of me growing as a devotee. Let me know for any other topic if anybody thinks about it. Just last 10-15 minutes only. हाँ प्रभु जी, वैष्णव सदाचार तो okay, yeah, because we discussed it in the past, but there is lot to be discussed still. So I think to keep it simple, I was thinking I can share some good lecture. Like Bhakti Charu Maharaj has very nice set of lectures. Rajeshyam Prabhu also did a very good series at one point. So and then we can discuss on that particular lecture. Any learnings people got, we can share, discuss that. That will help us all in that. Okay. Generally, a lot to learn in that area. Because one thing is for sure, मतलब हम उसके बिना ना आगे नहीं बढ़ने वाले. Okay. Or any other topic, anybody, like one nice series of things that can also be thought about is the Grihastha Ashram related. There are lot of materials available on that, but I feel let's start with Vaishnava Sadachar for a few weeks, and then and we'll not spend too much time. We'll just spend 10 minutes maybe last. Okay. All right. Yeah, I think that's all I have.
with Vaishnav Sadachar Prabhuji that we can also talk about a little bit philosophy we have behind our activity. That why do we do artis? Why we hold, Okay. that. I mean, we follow a lot of things, right? So, little bit behind that will give us more knowledge that what is the reason behind these activities. Yeah, you tell me, Prabhu. Matlab, we can talk anytime. I mean, like, I think that is a shorter topic. Like, you tell me which activity you're talking about. Like, I can explain that. I Yeah, mean, we don't. that when we'll talk about Vaishnav Sadachar and when we'll Okay. talk a little bit ठीक है. like that when how do we do the artis, how do we do those kind of activities, why we do, when we put some bhogas, then what arti we offer and all, what prayer we offer, why we offer. So when why things comes up, then it gives us more strong reason that why we do that, and then we know the reason why we follow that. So Sure. it will go hand on hand with the rest of Sadachar. That's what I was thinking. ठीक है. ठीक है. Yeah, makes sense, bro. We'll talk about. हाँ, ठीक है. No, my only intention is कि कुछ 10 मिनट लगाते हैं at least, क्योंकि I'm not able to think of what else can be done. So Prabhuji, one more thing I want, if it's possible, like yeah. we say कि वो द्वेष, मोह, माया ये सब छोड़ना है, तो मतलब can you discuss for each and every aspect कि what is मोह exactly और कैसे we can leave it, क्रोध, द्वेष, ये सब मतलब कुछ इसका ऊपर भी है क्या, कुछ डिस्क्रिप्टिव? हाँ, डिस्क्रिप्शन सब मिल जाएगा माता जी, बट इसमें ना कोई बहुत ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही जानते हैं. मतलब इन द सेंस वी आर एक्चुअली ऑल स्टक इनटू दैट, लाइक लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, envy, delusion and things like that. So I think ये सब इनका multiple ways to leave it, but one simple way to leave it is to just, as I said, what we discussed today, ki associate with Krishna, in the sense eat prasad, engage your senses, purify them, hear Krishna katha, hear the holy names, and all these things go away. Okay, we know about lust, greed, anger, right? I mean, and there are, of course, there is a lot available for it. Also, lot of material on each of these topics. A lot is available, but as I said, like in short thing is ki they will go away over a period of time. They'll all go away. You'll be surprised, like and so many people are discussing, right? कि अरे अभी anger नहीं होता, अभी ये नहीं होता, things like that. That all happens on its own. It's a process. It takes time, of course, but it happens. For sure, it happens. It will happen. Okay, Prabhuji. Yeah. Actually, Yeah. I think somebody discussed once in this class, or I don't remember, कि anger पे how to manage anger. Yeah, I wanted to discuss that more. I mean, actually. ऐसे कुछ एक दो चीजें थी, मुझे ऐसा ध्यान नहीं आ रहा, but something was that. नहीं, हाँ तो मतलब I thought I will discuss it last week, but last week हमने फिर plan change कर दिया. इस week भी मैं सोचा था कि कर सकते हैं, but I think Mataji didn't join. If she would have been here, we could have discussed about anger specifically. But the logic is simple. As I think Richa Mataji was saying, right? There's so many other things also. कि मतलब we are all part and parcel of God, right? I mean, and what about hurting now? Like भगवान के ही बच्चों को hurt कर रहे हो. Is that the right thing to do? Or in fact, anger, one of the reason for anger mostly is about our controlling mentality. अगर हम ये छोड़ देंगे ना कि हमारे कंट्रोल में चीजें होनी चाहिए, then the anger will also vanish a lot. A lot of it will vanish. Anyways, I think so there are a lot of things available, but it's a case by case medicine. I mean, अगर आपको एक प्रॉब्लम है ही नहीं तो उसके बारे में फिर क्या बात करना टाइम्स. No, I meant like love also. Like how can we detach ourselves with our family members? It means too much love से कैसे मतलब how to overcome all that? नहीं ओवरकम करने की जरूरत नहीं है माता जी. मतलब see, this process is not about हम योगा नहीं कर रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं जहां पर हमें जंगल में जाके कुछ करना है. We don't need to detach ourselves from our family members. Okay. In fact, we should attach them to Krishna. That is a better thing to do, so that we all are able to progress. But detach होके और ये सब करके will not work out very well. मतलब it is going to only create problems for you in your practice. Okay. Because as I said, right, हमें प्लान ये होना चाहिए कि हम अपने आसपास वालों को हमारे लिए एक एज अ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें. बिकॉज और कोई तरीका नहीं है. सो डिटैच करने का ज्यादा सोचना इज नॉट अ वेरी वैलिड आइडिया. इनफैक्ट वट एवर हैज टू हैपन, एज आई सेड, राइट, वट एवर हैज टू हैपन विल हैपन एज वी प्रोग्रेस इन डिवोशन.
this attachment to material things will reduce for sure. I'm telling you, it will reduce on its own. It will happen, but um, even then we have to do our responsibility. Okay, so when we proceed, तो होगा ऐसा कि it will become more of a responsibility than because of an attachment, but you will be doing better for them. हमें detach होके उनको छोड़ना नहीं. That is not going to work out. The grihastha ashram is not meant to do that. Grihastha ashram is about regulating our things, even though being in the midst of these attraction और अपने आप को regulate करके progress करना है. That is how the grihastha ashram was supposed to be in the past. Okay, I don't know if it made sense, but detach का मत सोचिए. मतलब like don't think like that. Whatever has to happen, by the way, in short, it will happen over a period of time. अभी हम artificially जो ये वर्ड्स बोलती है ना, artificially control करने जाएंगे ना, it is not going to work out for you. You'll only struggle. Okay. Thank you, Prabhuji. Thank you. Yeah, just wait. I mean, whatever has to happen will happen. Yes, Varun Prabhu. No, I was just thinking, डिटैच Good. मतलब नहीं, मेरे को ये था कि जैसे हम बोलते हैं ना कि द्वेष मोह माया ये सब छोड़ना है, तो वो कैसे होगा? मोह तो आप कैसे छोड़ सकते हो? छोड़ना तो खैर मतलब डिफिकल्टी है किसी से भी. नहीं वो छूट जाएगा माता जी, डोंट वरी. Okay. मतलब वो भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. just keep practicing, all of this will happen. You'll get I mean all of this will happen. ठीक है, ये सारा कुछ छूट जाएगा. It takes time. That process is called anarth nivritti, right? And the process is long. It can take more than a life also sometimes, because we have been collecting these bad things for millions of our life. So it will take some time. Do not think it will happen in a jiffy, but हो जाएगा, ये पक्का है. As per scriptures it happens. It takes time. And then beyond that, then the pure devotion का थोड़ा things start. Once we get out of these things, unless we get out of these anger, greed, lust, etc., etc., the progress is not much. Okay. And then beyond that, then you will realize this word, जो भगवान का नाम है ना, Krishna, what does it mean? Then only we can realize it once we are out of this. We are not, and that's why we feel कि हम कुछ तो बोलना है और कुछ करना है. क्यों करना है? क्योंकि किसी ने बोला है इसलिए कर रहे हैं. Kind of things, but it's purifying us. Thank you, Prabhuji. Thank you. Thank you. Yes, Varun Prabhu, you had something to say. Yeah, Prabhuji, one thought, I mean, maybe you can correct me, but अभी जैसे हम लोगों ने अपने गुरुजी और everybody अभव प्रभुपाद के बारे में हमने बात की थी अभी तक, है ना? Right. So should we actually discuss a little bit about Prabhupada himself and the current Guru Maharaj जो भी लोग हैं, and what the way he follows? हाँ कर सकते हैं bro. That also is a possibility. Just that I do not want to talk too much about some people and not about the other set of people, because they are all people who are yes. that is the only thing. मतलब, you know, I have attraction for some of them, a lot of attraction for a couple of them, right? But if I don't talk about one person, then somebody may say कि अरे मतलब उनके बारे में क्यों नहीं, type of thing. So I would rather keep it low from my side, and that is the reason I try to avoid that current discussion. Otherwise, the current disciples of Prabhupada are like so amazing. I can tell you, मतलब, I mean, those people are really, they can transform in front of you, in front of your eyes. मतलब, Even they are, जो पुराने गुरुजी लोगों जिनके बारे में हमने बात की है, even we have not covered everybody, right? So yes. that way we are not offending anyone. So we have just covered those people whom we can cover, and for probably there are many more people who are still there whom we can talk about. So yeah. I think वैसा भी कर But सकते. actually the current, actually, my suggestion is for current people it might be slightly tricky also. Lot of things are not very open for some of the people, not like, you know, things like that. I would say it will be a research where you will not find lot of fruits sometimes. Some you may find some basic things about them, not too deep, as I mean their disciples will know much more, but because there are variety of other forums they have access to, so बहुत ज्यादा मिल नहीं पाएगा आपको, मतलब
कुछ के लिए, as I said, right, कि I can talk about some of them very confidently, whom I am like more connected to, like, you know, like Radhanath Maharaj, I can tell a lot about him which is not documented anywhere, but others might not be possible. मतलब आपको मिलेगा नहीं बहुत कुछ, this is what I'm saying. मतलब आप try करके देख लो चाहिए तो एक आध का, मतलब you'll just find some basic things. Oh, this person was like, you know, one, but not enough for being able to talk. It could turn out to be a shallow discussion. That's my feeling, but I may be wrong. And that the other thing also is the, I think the best introduction for them is to hear their lectures. मतलब my recommendation is कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, राधानाथ महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, भक्ति विकास स्वामी, वैशेषिका प्रभु, इंद्रद्युम्न महाराज. I mean, some of these people we should hear them sometime. But at least उनके ना थोड़े lectures सुन के देखना चाहिए. That will tell us the real thing about them. इन सबके live lectures आज भी होते रहते हैं. Even people like Bhakti Charu Maharaj and all, they're like amazing. Yeah. Just that we can never aspire to get initiated by them anymore. But yeah, I don't know. We can discuss more actually. I mean, let's not finalize. We can discuss offline also on this topic. What is the right thing to do? The reason for me thinking about Vaishnav Sadachar was कि मतलब that's something which requires revision in time and again to keep us current. But yeah, let's think. I mean, you have a good point. Let me think more if something can be done on that side. Definitely, Prabhuji, Vaishnav Sadachar, so it should be discussed actually, we believe. So definitely we can start with that. Actually, what we discussed so far ना, मतलब भक्ति चारू महाराज और इनके lectures ना इसके बहुत deeper पे भी है, बहुत ज़्यादा deep भी है, और even राधेश्याम प्रभु के lectures भी काफी deep है. So I was just thinking कि we just discuss them for some time, and the thought was कि I can share those, we can go offline और फिर हम आके बस अपने points share कर सकते हैं, notes match कर सकते हैं, things like that. ठीक है. Anyways, I'll think more. मतलब if something can be done about the current acharyas, current Swami's, let me think more. ठीक है. I'll get back. All right. Yeah, that's all I had by the way. That's just a random thought from my side. We'll think.